I clarified it. Yes. See, the bond is called compulsory service bond, and it binds a candidate who has obtained admission in the government medical colleges or colleges on the basis of in our case, it is on the basis of scheduled tribe quota. So we have here scheduled tribe quota. So 4% of the total scheduled tribe quota of the S12 state of J&K, it has come to Ladakh. 2% from Leh and 2% from Kargil. There are around 1000 MBBS seats in J&K. So if 4% of it comes to roughly around 40 seats, 20 candidates each from Leh and Kargil. So today the situation in Ladakh is that we are severely short of medical officers, the doctors. Against total sanctioned strength of 175, we have only 75 in position. So about 100 posts are lying vacant, which is 60% of the sanctioned strength of the medical officers. So you can imagine the suffering people are undergoing because of the non-availability of the qualified medical officers in the field. So, especially in UT of Ladakh, the problem is very acute. This may not be true of other states or maybe even J&K, but 60% vacancy is a big gap in UT of Ladakh. So we have been trying to meet this gap as to how the services of qualified doctors could be made available in the field for the people of Ladakh. So this is one of the ways in which we bind the candidates who obtain seats on the basis of scheduled tribe quota of the Ladakh to serve in Ladakh. So this is done by all the states, almost all the states as far as I know. And this is also now accepted by the union government. I'll just give you an example. We have just got 6 seats under the central pool. And the government of India, while conveying that these 6 additional seats under the central pool have been made to UT of Ladakh, have made it a condition that you should seek a bond from these people who would be availing these central pool seats to at least serve for 5 years in Ladakh. So this is the standard all over the country. So now we have implemented it in the UT of Ladakh also. So it is just a binding, it is an undertaking which a candidate would give to the government that once he qualifies or clears his MBBS or for example BDS, then he will intimate us that I have cleared my MBBS course. Now I have got the degree, and now I can please give me an a job. So in a way the government binds itself to give him a job. So he intimates us after his completion of his course and then a degree course, and then the government assures him that we will provide you a job within 10 months, and then you have to serve in the UT of Ladakh for 5 years. And if the government cannot or does not provide him job for 10 months from the date he has intimated us about the completion of his degree or his course, then he is free from the bond. So it is basically an undertaking, and no money is charged from anybody. It is basically an undertaking which a candidate who is availing ST quota seat from this far off, severely starved of doctors region, that once he qualifies or clears that particular course for which he got admission because of the region only, Ladakh only, he must serve, and we all must serve, because if we don't serve the UT of Ladakh, then the responsibility or the moral responsibility is on even the natives to serve first UT of Ladakh. You would be surprised to know that under NHM, candidates from Karnataka
candidates from Maharashtra are serving in UT of Ladakh in far-flung areas like Chushul, Nubra. So if they can serve, why shouldn't the people who belong to this place, who are born of this place, then they bind themselves to serve in the UT of Ladakh, so that once this deficiency is met, then maybe one day we will not like to bind ourselves with this sort of a, because the binding is on both sides. On the candidate side, it is to bind himself on completion of his course to serve in the UT of Ladakh if he is offered a job within 10 months. And the binding is also on the government side, the administration side, that we will provide him job within 10 months of his completion of his course. So binding is on both sides. Suppose if tomorrow we fill these posts and we have surplus doctors, we don't have the jobs available with us for that, then such bonds become redundant, they become irrelevant. But for us it is very relevant and very essential that the people who obtain degrees on the basis of a backward area like Ladakh must serve here. So what was the logic behind 50 lakh rupee bond and 10 months, which are actually raising concerns? Logic is, basically you compare it with what the other states are charging. In UP, I am told, you need to verify it. It is 2 crore. So it's only a, this is just a nominal, a notional amount. You don't pay it actually. You basically bind yourself. It's a guarantee sort of a thing. That if you are, and you mind it, they are all government colleges. And in this country, which is basically overall, there is a deficiency of doctors across the country, and this country spends today, I don't know exact amount, but it spends more than crore on producing a doctor for this nation. This all money is public money. The money with which the medical colleges run, the government medical colleges run, is government money. It's a public money. It's the people's money. So people's money is already spent on producing a doctor. So it is more than 1 crore. I mean, you can verify. I don't know. Maybe it is many times more than I have. But I used to hear around 20 years ago that it is 50 lakh. But now it would be very high. See, the cost to the society is very high. So yes, if you obtain a degree a course, go to a private college in UK or in USA or somewhere, then it's a different matter. But if you are public money is being spent on training you to become a doctor, then the public also then expects that in return they should get the services. सर, तो जिस तरह बोर्ड में तो ये भी लिखा गया है सर कि उसमें ये भी मेंशन है कि 50 लाख उसमें भरना पड़ेगा. नहीं, I told you, please, I am clarifying it. Nowhere in the country, nowhere in the world, whenever you take a bond, it means you are giving an undertaking. It is not that any amount is charged from anybody. It is only an undertaking that any candidate gives. That if I do not, suppose if I offer him a job when he intimates me that I have completed the training and he doesn't join it, rather he prefers to go abroad or maybe go to another state when his own UT is suffering, then certainly he is bound to pay rupees 50 lakh as a compensation to the society. Sir, what if he wants to pursue PG courses? Yeah, he may do it. He must join the service. The bond is that he has to join the service. See, we have many doctors who are in service and who are doing their PG also. So there are rules for that. Once you are in a government service, you also can pursue higher courses, and there is a provision under rules. So he will enjoy all the all the facilities or privileges or whatever are available to a government servant as per the rules. So you said the main motive is to fill up the gap of shortages of doctors, but doesn't it discouraging step on the part of administration, because poor students belong to poor families, do not afford to pay 50 lakhs rupees. No, they don't have to pay.
Exactly. No, sir. What I'm saying, I did not have to pay. Yes, yes. They don't But- have to but pay. sir, but So sir, they will get a job once they complete the training. So once But they are due to integrated of a our- job, they must come and join. if he is अगर उसको बीच में छोड़ना पड़ा तो Why? उसके लिए Why should he do that? The ये तो point हम is, कह नहीं सकते ना सर बीच में see, अगर if something, due to see, unavoidable what circumstances unavoidable circumstances do you have in mind? यस सर किसी के साथ भी हो सकता है What by? Tell me. ये तो अभी नहीं पता And do you have ये any? भी Do you have any instance? Do you have quote me an instance? yes if he Quote me any instance. Please, single instance. Tell me that this has if happened he in the is past. not able to Please complete tell me the course- instance. अगर Don't किसी make को- a wild. Don't make a wild. Just of a picture. Tell me, have you had any incidents is like there any that? condition sir No, no. if he Please, has to I am just asking you. Do you have any instance in your mind when such things has happened? Please tell me. ये तो मैं अभी नहीं नहीं कह है ना, सकता, तो सर। फिर please don't raise these questions. नहीं सर आप If you can't, just make wild, assumptions. वर्ड नहीं सर Do ये- you have any case? I am asking you a very simple question. Do you have any case in your mind? Do you have any case in record where a student has left his degree midway due to circumstances beyond his control? Do you have? Sir, No. shall we see that in case when you complete this quota, Yeah. then this bond will See, get- I have told you. I have told you that these things are done only to meet the gap Okay. which are necessary to be met so that we give public health care services to the poor people anywhere for the whole country. It's not only Ladakh. Everywhere there is a deficiency of doctors in the country. Absolutely. So doctors, once they get the degree courses or they get equipped with the knowledge at the cost of the public money, then they don't like to serve the people on whose money they have got trained. So this is a phenomena across the country. That is why I am telling you, it is across the country that they take bonds. So this is not new. This is only falling in line with the practice which is being followed everywhere. That is why I quoted you that 6 seats which have been allotted to us under central pool. One of the condition is take a bond from them to serve for 5 years in Ladakh. सर तो अभी जिस तरह ये बॉन्ड निकला है तो यहाँ पे कौंसल भी है तो उनके नोटिस में बोलता है कि ये जो है उनके नोटिस में नहीं आ गया है. No, it has been widely notified. सर सीट अभी है, रिजर्वेशन पहले में नहीं अभी था। भी See, the point is that once it is notified only, then it comes to the knowledge. यस सर सीट रिजर्वेशन अभी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज है क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्लान है इन फ्यूचर कि ये पूरा यूटी लेवल पे हो जैसे कि ले See, the point is your UT is only composed of 2 टू डिस्ट्रिक्ट districts. So the reservation is equitably distributed between 4%. Suppose if in our state there are 100 ST posts under reservation quota, there are 1000 seats. So if you calculate whatever is the ST percentage, 8%, 9%, whatever. So then the total posts, suppose if we calculate them to be say around 90 or say 100, out of that then 4% comes to the Ladakh, because our population of the whole state of J&K, the population of STs in Leh and Kargil is 4% of the whole population of the ST population. So that is why we have been given 2% of the ST quota and 2% of the ST quota for both the districts, which comes to the 40 seats. That's what I'm saying. Sir, what is the status of medical college, sir? When it See, is- medical college has 2 components. One thing is the civil infrastructure or the sanctioning. As you know, sanctioning has happened long ago. We have been allotted money around 327 crores even for construction of the physical infrastructure. So physical infrastructure will start this year, this coming year. And as far as the second important part is the manpower. So around 932 posts. The proposal has gone to the government of India that because every medical college has at least 900 plus posts, and our situation is little more serious because we don't have any medical college here or any other institution like that. So we have to create the medical tertiary care system or medical college system afresh. So we need around 932 posts.
So this proposal has gone to the Government of India, and I'm very hopeful that it will get sanctioned. Once it gets sanctioned, then the process of appointment of the faculty, appointment of the people will begin, and then we can start the medical college. But it will happen, and we are continuously following it, and I am very hopeful that it gets set up as early as possible. This is a बेडेड limited. हॉस्पिटल जो कैरल में अभी बन रहा है उसकी क्या स्टेटस है? देखिए 300 बेडेड हॉस्पिटल वहाँ जो बन रहा है, यू ऑल नो, जो करगिल में गए हैं उन हॉस्पिटल को देखें कि वो एक बड़ी तंग जगह पे है, वो काफ़ी पुराना है, और वहाँ इतना ज़्यादा रश होता है कि अब वो जगह कंप्लीट मतलब एडिक्वेट नहीं थी। तो इसलिए कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले, ये एक फैसला लिया गया कि हम इसके लिए अब एक खुली जगह पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो उसके लिए कुर्बाथान में एक 4-5 साल से पहले बन रहा है ये। पहले ये एक प्रोजेक्ट होता था हमारा STF का, उसमें फंडिंग हुई, उसके बाद ये थोड़ी सी PMDP में फंडिंग हुई, अब हम इसको SDP में फंडिंग कर रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है इसकी सेंट्रल जो विंग है उसका, तो सेंट्रल जो पोर्शन है बन चुका है। लेफ्ट विंग अगर आप उसे कहें तो वो भी काफ़ी तरह बन चुका है, राइट विंग पे काम चल रहा है। तो इसका अभी हमने कोई 4 महीने पहले इसका हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया 40.32 करोड़ का। तो ये हम इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि कुछ जो पुराना हॉस्पिटल है उसमें कुछ फैसिलिटीज़ रखेंगे जो कि शहरियों को इमीडिएटली चाहिए होती हैं। जैसे कैजुअलिटी एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे किसी को इंजरी हो गई, कोई गिर गया, चोट लग गई, या लेडी को रात को मतलब मान लीजिए डिलीवरी के लिए पेन्स हो गई, कुछ ऐसी इमरजेंसीज होती हैं। मतलब हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोथ ड्यूरिंग माई सर्विस एज ए डॉक्टर एंड एज एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे ज़्यादा गांव में दिक्कत होती है डिलीवरी की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डिलीवरी की होती है, क्योंकि कभी डिलीवरी जो होती है वो कामयाब नहीं होती, कभी कुछ परेशानी होती है, खासकर प्राइमरी ग्रेविटा जिसको फर्स्ट टाइम होता है। तो ऐसे हालात में हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हो सकता है कि जो कैजुअलिटी है, गायनी है, ऑब्स्टेटिक्स जिसे हम कहते हैं, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ, हम उसको शहर के पास ही रखें। हो सकता है, हमें दिस विल बी आफ्टर डिस्कशन विद एवरीबडी एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हमारे हेल्थ के हैं, और जो चीज़ें जो इलेक्टिव हैं, सर्जरीज हैं वो हैं, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो हम शायद दूसरी जगह शिफ्ट करें। लेकिन हॉस्पिटल एक ही है, देयर आर नो 2 हॉस्पिटल्स, इट इज़ बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ओनली एक इसका पोर्शन जो है वो पुराना रहेगा और एक पोर्शन इसका नया रहेगा। तो ये जो है इसके ऊपर मैं आज से कोई 3-4 महीने पहले वहाँ विजिट किया था, मैंने इसको कहा था कि इसको और अच्छी तरीके से बनाइए, ताकि हमारे यहाँ देखिए अब तो हम कंस्ट्रक्शन में ये कह रहे हैं कि चाहे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं, वो या तो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, या वो डिग्री कॉलेजेस होते हैं, या वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, या वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस जो हैं डायरेक्टरेट्स होते हैं, इन सब की कंस्ट्रक्शन जो है अब हम ट्राई कर रहे हैं कि ये सोलर पैसिव होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं लद्दाख में। तो मैंने इनको कहा कि ये जो जैसा अब तो चलो बन चुका है, लेकिन अब फ्यूचर जो आगे काम कर रहे हैं इसको टोटली आप जो है सोलर पैसिव हीटिंग करिए, ताकि यहाँ पे हीटिंग, देखिए हमारे अस्पताल में सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत हीटिंग की होती है। मतलब नवंबर के बाद तो फिर आप तो यहाँ रहते हैं सभी, कि नवंबर के बाद तो पेशेंट का अंदर बैठना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अवर हॉस्पिटल शुड बी वेल हीटेड। तो उसके लिए हमने उनको कहा है कि आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करिए। वी वांट टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग in a manner that it is solar passive, or one of the having the best equipment, best laboratory equipment, best machines, चाहे वो एक्सरे की हो, चाहे MRI हो। तो उसके लिए हमने उनको काफ़ी ज़्यादा इस बार पैसा दिया है, लगभग 20-22 करोड़ रुपया की आप इक्विपमेंट लीजिए, ताकि लोगों को जो है अच्छा बने और वो अस्पताल जो अच्छा। सर, ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पदुम में भी स्टाफ की कमी है, सुना हमने डॉक्टर्स की। रिसेंटली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी रिप्रेजेंट किया था। मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आज की डेट में तो वहाँ कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जांस्कर की एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जांस्कर में जब मैं विजिट टूर पे गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि जो जांस्कर का हॉस्पिटल है वो एक बहुत छोटी सी जगह पे है। मतलब वो 15 कनाल जमीन जगह भी नहीं है, 15-16 कनाल जमीन। तो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या जैसे हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी कहते हैं, वो इतनी छोटी जगह पे नहीं होना चाहिए। वो तो बहुत तंग है वहाँ, तो अगर आपको कुछ एडिशनल करनी है, एक्सपेंशन करनी है तो कर नहीं सकते। तो इसलिए हमारा प्लान है कि हम उसको एक जिस तरह यहाँ कर दिया, जीएमपुरा में कर दिया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल में कर दिया, तो जांस्कर में भी क्योंकि जगह एग्जिस्टिंग बहुत कम है, हम उसको एक उसका जो दूसरा पोर्शन जो होगा वो एक बड़ी अच्छी तरीके से खुली जगह पे जो है बनाने का प्लान कर रहे हैं।
उसके लिए हमारे डीसी और एलएसडीसी जो कारगिल है उनके पास उनका लैंड को अलॉटमेंट का केस आई थिंक बड़ी एडवांस स्टेज में है। प्लानिंग हमारी जो है डीपीआर बन चुका है और अगले साल से जांस्कर में भी हम एक अच्छा एचडीएच जो है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसे हम कहते हैं वो हम बनाएंगे। जहाँ तक स्टाफ का ताल्लुक है, क्योंकि स्टाफ देखिए जिन जिन जगह पे डॉक्टर्स को क्वार्टर्स होते हैं, रहने की सुविधा होती है, वहाँ डॉक्टर जाते हैं। जहाँ पे रहने की सुविधा नहीं होती वहाँ डिसइंसेंटिव होता है। आजकल के नए नए डॉक्टर बच्चे जो हैं जनरली वो या कोई भी इंसान होगा, जब आप किसी जगह सर्व करने जाएंगे अगर रहने की जगह नहीं है तो आप वहाँ पे डिसइंसेंटिव होता है। तो गवर्नमेंट का क्वार्टर अगर वहाँ होगा तो इंसेंटिव होता है कि चलो वहाँ क्वार्टर है। तो हम सोच रहे हैं कि जितने प्लान हर जगह है करने का, चाहे वो नुब्रा हो, चाहे जांस्कर हो, चाहे द्रास हो, कि चाहे ये आपका खलसी हो, कि जितने भी आपके सीएचसीज हैं या पीएचसीज हैं वहाँ डॉक्टर्स के रहने की जगह जो है या स्टाफ के रहने की जगह जो है उसको उतनी ही अहमियत दी जाए जितने की आप अस्पताल के बिल्डिंग को देते हैं, क्योंकि वो स्टाफ वहाँ नहीं होगा तो वो अस्पताल चल नहीं सकता। तो इसलिए, और अभी तो हमारा जो ये लेटेस्ट जो रिव्यू हुआ एचएलजी का, तो उसमें तो ये बात भी आई कि अगर आप हॉस्पिटल ही गर्म रखेंगे और जो ये डॉक्टर्स हैं या जो पैरामेडिकल स्टाफ है जहाँ ये लोग रहते हैं, उनके जो रेजिडेंशियल जो क्वार्टर्स हैं वो अगर वो ठंडे होंगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि उनके जो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन हैं वो भी हीटेड होनी चाहिए, और जो हॉस्पिटल्स हैं वो तो हीटेड होने ही चाहिए, क्योंकि वहाँ तो आपका पेशेंट है वो ऑलरेडी एक ऐसी स्टेज में होता है कि जब वो स्ट्रेस जो है ठंड का नहीं ले सकता है। तो इसीलिए ये जो चाहे जांस्कर है चाहे वो और कोई भी जगह है, हॉस्पिटल पर से जो बिल्डिंग हॉस्पिटल की है हम उसको भी करेंगे डेवलप, अच्छा मॉडर्न सेंट्रली हीटेड, और उनके रेजिडेंस को भी हम एडिक्वेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाएंगे ताकि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ जो है उसको रहने के लिए कोई दिक्कत ना हो।